Hey guys, good morning. So this is the day after, and the thing is we were supposed to go for a jungle walk in the morning, but Shivang and Dad did not wake up. So now I spoke to the naturalist person here and he said, "Sir, कोई tension नहीं, आप reception पे आ जाओ, we'll figure out something to do." So let's go. I just got some tea right now, sitting here enjoying the view. And भैया आप कहाँ बोल रहे थे, कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग अभी चलते हैं कोक्का लेक करके एक प्लेस है, वहाँ पे हम लोग चलेंगे, बढ़िया नेचर ट्रेल करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा टेलिया गेट तक भी हम लोग चलेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। The naturalist said that I'll take you somewhere, at least आप आ जाओ रिसेप्शन पे, आप आए हो, आपकी इच्छा है तो आपको वहीं ले चलूँगा। The staff has really been incredible at Tathastu, so I'm just going to get my car at the villa right now. Just having a banana before I leave. Guys, did you know we share 60% of our DNA with a banana? Okay, so our guide is coming with us. Wow, that's a nice camera. भैया कौन सा कैमरा है ये? ये 60D है। अच्छा। क्या भैया? थैंक यू सो मच भैया। इधर से रिवर्स चलना है। ओके, रिवर्स चलना है? Yes. चलो ठीक है। So we've come to a pot. ये विलेज का नाम क्या है? पोटरी विलेज, पचधार। पॉटरी विलेज? पचधार। पचधार। कितना टाइम लगता है भैया एक बनाने को? 2 मिनट? उस साइड पे वो डिजाइन कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप भैया ये? 10 साल। बाप रे, बढ़िया है। वो डिजाइनिंग कर रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। Pachdhan Pottery Village is quite a friendly village near Pench. If you do visit Pench and have a couple of hours to spare, you must check out this homely place. Chotu Baya, a local expert in Pachdhan, gave me the opportunity to make some pottery. This was the first time I ever made pottery, so I'm quite happy with how it turned out. Here's a sneak peek of me making some pottery. I've got extensive footage related to this village and me molding the clay and making pottery, the results of which I will share in a separate video. So stay tuned for that. And before moving on to the next adventure, if you haven't already, please hit that like button and subscribe, because most of you who are watching, more than half of you who are watching, are not subscribed to the channel. Thank you, and let's move on. गाड़ी आई है। येलो कलर के बर्ड्स है और उनकी आँख से नीचे से पूरा गले में ब्लैक है और बाकी फेदर्स के पास में ब्राउन है। तो इट्स जस्ट क्रेजी टू थिंक अबाउट दिस न्यू लाइफ बीइंग बोर्न देयर। मेरे हाथ में फिट हो जाएंगे बर्ड्स, इतने छोटे छोटे बर्ड्स, इतना, और सब साथ में मिलके रह रहे हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। सब साथ में मिलके रह के दे आर ब्रिंगिंग देयर young into a population that cares for each other. They are helping each other वहाँ पे। एक बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाके बाकी हे डाल के उसको हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। मैंने ये देखा। इनक्रेडिबल स्टफ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। थैंक यू सो मच भैया यहाँ पे लाने के लिए। Too good. Apart from the Baya weaver nesting, I also had the opportunity to see some honeybees from these binoculars that Imran Bhaiya gave me, and all this was a spur of a moment plan that the naturalist made for me. And again, a huge shout out to Tathastu. If it weren't for those guys, I wouldn't be able to go to any of these places because I had no idea of all these places around Pench. So we're removing the most Indian problem ever. Don't blow the horn in the jungle, guys. Hi guys, so we've come to Telia gate right now for a nature trail, and the trail starts from here. This is the trail, so we're going to go inside from here.
Apparently, the Telia trail requires at least 2 visitors to be there, so I wasn't able to do that today. I guess what happens for the best, because there's something for me to do when I go back that I haven't done already. Jackal. हाँ थोड़ा आगे कुछ उसको स्मेल आ रही है क्योंकि यहाँ से एक टाइगर गुजरा है, अभी उन्होंने बताया गाइड ने। हो सकता है कि टाइगर ने स्प्रे किया होगा, तो वो उसी को सूंघ के थोड़ा डर रहा है क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी स्ट्रांग होती है। Beyond this is going to be one of the most beautiful sights that you will see today. This is the Kohka Dam, and lo and behold, are you ready? Let's go! And appreciate life. वहाँ बोटिंग है ना? हाँ वहाँ बोटिंग होता है। बढ़िया। ये यहाँ पे ट्रैक्स दिख रहे हैं, मतलब जो सफारी के जीप्स है वो भी जाते हैं यहाँ से ना? भी जाते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, टूरिस्ट यहाँ पे आके रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर यहाँ अपनी गाड़ियों को खड़े कर देंगे और फिर यहाँ से वहाँ तक एक बढ़िया नेचर ट्रेल हो जाता है उनका। अच्छा। हाँ, कोक्का डैम। नेचुरल है या मैनमेड है? ये मैनमेड है। हालांकि बहुत पुराना मैनमेड है ये। रिसेंटली नहीं बना है, बहुत पुराना है। इस साइड का जो पूरा आप ये घना एरिया देख रहे हैं, हाँ ये जो जंगल है ना, लगा हुआ है, कोर है ये। हाँ कोर का जंगल है। ओके। यहाँ बफर का कुछ थोड़ा पार्ट है, बाकी इसके पीछे पूरा कोर है। Let me know in the comments below, when you go out for a vacation, what food do you start with? Do you start with dessert? Do you start with coffee, omelette, dosa, poha, cornflakes? Let me know in the comments below. This is the view from the terrace of the villa. That's the lotus pond. Beautiful. I wonder why this is kept. Probably for the monkeys not to be able to touch it and spoil it. But yeah, if you know why this is made, please let me know in the comments below. And please let me know if I am right about this. I'm just making a random guess. So yeah, pretty cool. This is the terrace. What a nice property this is. That was basically the cave room, and on top is a tree house over there. I don't know if it's visible properly, but it's occupied, so we weren't able to see that. Yes, that's the tree house on the top. The tree house and then the cave room over there.
We took a wrong turn while leaving Tathastu, and fortunately, we stumbled onto a very sweet girl that looked at us longingly. She was so appreciative of such a small act of receiving food. So, my request to you is after you finish watching the video, for you to do something small or big for someone else. Everything happens for a reason. I know. Which colleague?